we were discussing about was this circuit. Okay. So in this case, what we had was that we have to, if we have to go for braking, if we consider the operation in a normal motoring mode. In this case, this was your supply, and the energy or the power was being fed to the DC motor. You have RA as the resistance of the armature and E as the back EMF. Okay. So now, if you have to go for a regenerative braking, in that case, whatever energy is contained in the motor load system is to be transferred back into the source somehow. So in that case, all the circuit configuration remains same. The only thing is that the direction of current is to be reversed. If it is to be reversed, in that case, what should be the criteria? Should be the only, has to be the only criteria is that current always flows from a higher potential towards a lower potential. Here, in this case, V is greater than E, so the current is flowing from V toward V into E. And now, if you have to reverse the direction of current, in that case, you will have to increase the value of V beyond E. Okay. So this is the basic principle of regeneration. So now for this purpose, what you will have to do is that because E is proportional to omega, and you have to break the machine, so omega is going to decrease. So in any way, E is also going to decrease. V is considered to be constant because it is a supply voltage. So now what happens is that you will have to put a converter in between V and E, or between the source and the motor, such that the source voltage is reduced so that the value of E becomes larger than the value of V, or the input voltage. And because converter is in between that, so it takes care of that. So if you have this E to be greater than V, or V is reduced beyond the limits, in that case what happens is that the direction of current is reversed now. Okay, so now this is a continuous process because the speed goes on decreasing, the value of E goes on decreasing because E is directly proportional to omega. So V has to be continuously reduced simultaneously. यहाँ पे दो बातें आती हैं पहली कि the direction of current flow has been reversed due to the change in the levels of voltage of E and V, but still the direction of the amount of current that flows through this path decides the torque, because torque is proportional to Ia. So whatever larger be the value of current, you have a larger torque. T is proportional to phi into Ia. Phi is considered to be constant for a constant voltage. Separately excited DC मोटर है तो अलग से excite हो रहा है अगर आपके पास, तो वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. तो I actually Ia decides the amount of torque. ठीक है. एंड दिस आई ए इज एक्चुअली, अगर आप के वी एल पे ही वापस आ जाएं तो ई माइनस वी अपॉन आर ए जो है वो आई ए बनेगा इस वाले उसमें. तो होगा क्या कि द लार्जर द डिफरेंस बिटवीन ई एंड वी, द लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ आई ए, and the larger will be the torque. Braking torque is important because it is that reverse torque that is applied to that motor load system that is produced by the machine. So in that case, you will have to maintain a constant, appreciable amount of difference between E and V, such that this IA is an appreciable value, and you have a good amount of braking torque available to you in all the cases. And it has to be reduced, V has to be reduced simultaneously as E goes on reducing, such that you carry out a constant braking torque throughout. Constant braking torque throughout can be made of if you keep the value of IA to be constant. ठीक है. तो उस जो V और E के बीच का जो वोल्टेज है, जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बना के रखेंगे. सर्किट पैरामीटर्स उतना ही है, यानी आर ए है बीच में, तो आई ए भी कांस्टेंट बना रहेगा. ठीक है. You will also have to take care in this case is that the machine does not go provides a current not more than the rated current IA. That means the difference in voltage in E and V should not be that much कि IA increases beyond the rated value, so that will burn out the machine. ठीक है. तो दोनों तरीके में है ना, कम होनी चाहिए क्योंकि ब्रेकिंग टॉर्क नहीं होगा, ना ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि
रेटेड से ऊपर ना निकल जाए. तो यू हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर voltage level difference between V and IA using that converter, and that has to be continuously tracked with the speed of the machine. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो जाती है ऐसी कि हमें ये काम करना है ऐसे करके. नाउ हाउ इट इज़ डन, दिस इज़ द प्रिंसिपल व्हाट इज़ टू बी ऑपरेटेड. और ये आपके पास रिवर्स कंडीशन बनती है जिसमें जो है आपके पास रिवर्स मोटरिंग है, यानी उल्टे डायरेक्शन में. तो आपके पास ये पोलैरिटी भी उल्टी लगी हुई है, तो ये भी इंड्यूस उल्टा होगा. ये दोनों एकदम एक दूसरे के कॉन्जुगेट टाइप की चीज़ हैं. ठीक है, और एग्जैक्टली वही दूसरी कंडीशंस आपके पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलती है विद रिवर्स सप्लाई. ये देखो सप्लाई आपने रिवर्स कर रखी है, बाकी सारी कंडीशंस वही हैं. द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट ये दोनों भी आप कंडीशंस देखेंगे वी ग्रेटर देन ई, तो यहाँ मॉडुलस ऑफ वी ग्रेटर देन ये मॉडुलस ऑफ ई है क्योंकि उल्टा लगा हुआ है. और ऐसे ही एग्जैक्टली ये कंडीशन दोनों ब्रेकिंग की एक सी हैं. फॉरवर्ड और रिवर्स इसलिए है बिकॉज ओमेगा इन दिस पार्ट इज ऑफ दिस एक्सिस इज रिवर्स, सो ये दोनों रिवर्स हैं और ये ऊपर वाले दोनों फॉरवर्ड हैं बिकॉज दिस स्केल इज फॉरवर्ड फॉर बोथ दिस केसेस. ठीक है, तो ये बात तो हमने पहले ही बताई थी आपको. अब जो है we start with this one. What is braking? Obviously the energy contained in that dynamic motor is works as a generator, and that works as a prime mover in fact, and the machine works as a generator, and it regenerates. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली क्या क्या चीज़ कैसे थी. Now there are three methods of braking. ठीक है, the first one is known as regenerative braking. इसे रीजनरेटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रीजनरेटेड इन दिस केस. ठीक है, एंड देन द अदर वन इज डायनामिक और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग. इन दिस केस यू एक्चुअली रीजनरेट योर एनर्जी. That means the mechanical energy contained in that motor load system is converted into electrical energy, but that electrical energy is not actually pumped back into the source. It is wasted in the form of heat through resistors. यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे डायरेक्ट आप अगर पैड ट्यूब ब्रेकिंग करते या कोई ऐसी ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग करते तो उसमें डायरेक्ट फ्रिक्शन के थ्रू जो है वो हीट प्रोड्यूस होती थी और उसमें वो एनर्जी डेसिपेट होती थी. In this case, this is a bit clean and precise form of braking by wasting that electrical energy, by mechanical energy converted into electrical energy, and that electrical energy is now wasted in the form of heat in the resistors. ठीक है, इसकी भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी जब ये डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी. And the last one is plugging or reverse voltage braking. This is a very simple procedure that if the machine is motor load system is moving in a particular direction with the supply, so what you do is that you change the connections of that machine such that it produces a torque in the opposite direction. अगर आपके पास एक डीसी मशीन है तो अगर आप उसका फील्ड या आर्मेचर को रिवर्स कर देंगे तो इन दैट केस टी इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए. तो आइदर आई ए इज रिवर्स्ड और फाई इज रिवर्स्ड. ठीक है, तो if any of these reverses, in that case the direction of torque produced will be reversed and it will be in the direction opposite to the direction of the motion of the machine. ठीक है, so in this case you require the supply to be changed, the polarities to be changed. थ्री फेज इंडक्शन मोटर जैसे आपके पास होता है या सिंक्रोनस मोटर है तो उस केस में जो है आप फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं, यानी दोनों में से एक फेज, दोनों तीन में से दो फेज को जो है आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो रिवर्स फेज सीक्वेंस हो जाती है. तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दैट केस कि आपके पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है चलती हुई मशीन में. ठीक है, एंड यू विल हैव टू टेक केयर दैट एज सून एज दैट टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन stops that machine and now it will start to move it in the opposite direction, so you will have to disconnect the supply. वरना उल्टे डायरेक्शन में आप ब्रेक कर रहे थे, आगे जाने के लिए रोक रहे थे उसे, और जब वो रुक गई पूरी तो वो पीछे चल देगी अगर आपने वो कनेक्शंस ऑफ नहीं किए तो. ठीक है, so these are the three forms of braking what we have. Regenerative braking obviously is the most efficient form of braking all these, because whatever energy is contained in that motor load system is being pumped back into the source. Only the energy wasted in this process is are the losses that happen in the electrical circuits of the converter and the machine itself.
ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट रीजनरेटिव ब्रेकिंग, कंडीशन सारे में ऐसे ही होती हैं, क्या चाहे आपके पास डायनामिक ब्रेकिंग हो और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग हो। इफ़ यू फर्स्ट यू रीजनरेट, पहले वाले केस में जो है आपके पास आप उसे वापस पंप बैक कर देते हैं सोर्स में, और दूसरे वाले केस में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के उसे उसे वेस्ट कर देते हैं रेजिस्टर्स में। ठीक है, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे उसके वही रहते हैं। दिस इज ऑल आई हैव टोल्ड यू। नाउ कम टू दिस पार्ट कि हाउ द परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड व्हेन यू टॉक अबाउट। अभी तक हमने जो सेपरेटली एक्साइटेड की बात करी थी, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस पोर्शन की बात करी थी कि that you have a natural characteristics. This is a doping characteristics what we derived over from the relationship between speed and torque. And if this that is also increased in the negative direction, यानी माइनस टी के लिए भी आप करें, तो ये आपकी एक लाइन जो है वो नेचुरल यानी रेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है वो आपके पास बन के आ जाती है। उसके बाद जब हमने स्पीड कंट्रोल की बात करी थी, तो हमने नीचे जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी वोल्टेज के लिए, और ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिड्यूसिंग वोल्टेज के लिए, और ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी वो रिड्यूसिंग फ्लक्स की वजह से आई थी। यानी फील्ड फ्लक्स कंट्रोल जो है वो इसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के रेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर था, और ये जो है आपके पास इसके नीचे था वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। On the very same principle, you extend or using the very same equations by simply by replacing the values of t to be minus t, you can extend these characteristics. तो हमने ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उसी लाइंस को जो है एक्चुअली पीछे हमने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, एंड यू कैन जो आपने यहाँ लिख रखा था डिक्रीजिंग वी कांस्टेंट फाई और डिक्रीजिंग फाई कांस्टेंट वी, ऐसे करके जो है ना, ये दोनों चीज़ें जो हैं जो यहाँ पे लागू हैं वही इस तरफ भी लागू हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट इट शोज। अब ये बात तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स से हो गई कि ठीक है हमने उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो एक्सटेंड कर दिया। when we have extended these characteristics, the governing equations remain same, or the relationships between speed and torque what we derived earlier are the very same. उसमें कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, बस t को माइनस टी से रिप्लेस किया है। तो वी हैव नाउ ऑल्सो हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ टी ओमेगा प्लेन। ठीक है, तो अब होगा क्या कि दैट दिस इज डब्ल्यू ओमेगा एम जीरो या ओमेगा नॉट भी आप इसे कहते हैं, तो इट इज़ द नो लोड स्पीड। अगर आप देख रहे हैं इस पे यहाँ पे टॉर्क जो है कुछ भी नहीं है, और स्पीड जो है ये नो लोड स्पीड है। दिस इज द नो लोड स्पीड एट रेटेड वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरसेप्ट बनता है जो उसमें जो आपकी ओमेगा टी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो जो उसमें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो है जो सी इंटरसेप्ट है वो आपके पास जो है वो ये ओमेगा नॉट या ओमेगा एम नॉट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो दिस इज द नो लोड स्पीड ऑफ द मशीन। नाउ if you have to break the machine for speeds above the no load speed, यानी इस डायरेक्शन में आपको इसे वो करना है, तो what will happen is that you will have to use field flux control method. And if you have to reduce the speed, if you have to break the machine for, यानी इस रीजन की हम बात करें, break the machine for speeds less than the no load speed, then you will go for डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ वी। यानी इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप अब आप ब्रेकिंग रीजन में हैं, यानी इस क्वाड्रेंट में काम करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है, आप इसमें काम कर रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको स्पीड कम करनी है, यू हैव टू ब्रेक। स्पीड कम करने का मतलब नीचे जाना है ऐसे, ये ओमेगा इस तरफ यहाँ जीरो है और यहाँ बढ़ रहा है इस तरफ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर अप। तो व्हाट यू विल हैव टू डू हियर इज दैट what your requirement is that you have to decrease the speed। कहीं भी आपके पास पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है वो मोटरिंग रेंज रीजन में होगा। तो होता क्या है, आपके पास अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, एनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ यानी ओमेगा टी ऑपरेटिंग पॉइंट ये वाला बना हुआ है, तो व्हाट विल हैपन एज सून एज यू डिजायर टू हैव अ ब्रेकिंग, आप चाह रहे हैं कि वो मशीन ब्रेक हो, तो व्हाट विल हैपन, आपके आपके पास कोई गाड़ी जा रही है, आप अपने ड्राइव कर रहे हैं एंड यू रिक्वायर द कार टू ब्रेक, उसकी स्पीड कम करना चाहें और रोकना चाहें, तो एट द इंस्टेंट व्हेन यू रिक्वायर दैट और यू डिजायर दैट द system is to be braked,
In that case, at that particular instant, the speed is the same as that what the machine is or the motor load system or your vehicle is running into. यानी स्पीड फॉरन चेंज नहीं हो सकती, आपने खाली डिजायर किया उस पॉइंट पे, अब आपने कहा कि हम यहाँ पे से ब्रेक करेंगे, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये मोटरिंग रीजन है, करस्पॉन्डिंगली ऑन द वेरी सेम स्पीड, ये आपके पास स्पीड स्केल है, ठीक है, what actually happens that this characteristics is shifted on the very same speed over here. यानी अगर ये पॉइंट है और ये इसका वो बन रहा है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बन रहा है, तो इस पे जो भी आपके पास यहाँ पे इंटरसेप्ट मिलेगा, यहाँ पे आके ये चीज़ रुकेगी पहले. दैट मीन्स जैसे ही आप v ग्रेटर देन ई करेंगे, सॉरी e ग्रेटर देन v करेंगे, स्पीड चेंज नहीं हो जाएगी फॉरन, बट इट विल move into this quadrant because now the direction of current has been reversed. ठीक है, and when this has reversed, what actually happens is that now the machine is into braking. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट टी ओमेगा प्लेन से ऑपरेशन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, कोई जर्क नहीं हुआ है बिकॉज ओमेगा उतना ही है. किया क्या आपने कि यू एक्चुअली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. अगर आपके यहाँ से है तो अगर ये डिक्रीजिंग फ्लक्स ऐसे करके तो ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्लक्स नीचे से ज़्यादा है, तो आपने क्या किया, सिर्फ फ्लक्स को बढ़ाया तो फौरन ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया. इसकी ओमेगा तो चेंज नहीं हुई है, बट इसका मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज हो गया. नाउ द मशीन इज इनटू ब्रेकिंग मोड. If the machine is into braking mode, the thing is that now the energy is being transferred from load side towards the source side. ठीक है, फर्दर इफ यू फर्दर डिक्रीजिंग फ्लक्स ऊपर है, इंक्रीजिंग फ्लक्स आप लेंगे तो व्हाट विल हैपन, आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे से चलने दीजिए यहाँ तक, ठीक है, देन यू पुट another value of flux over here, तो what will it do that it will shift to this, यानी ये नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएगा, फिर इससे नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएगा. So this is how you go on cut out increasing the value of phi for speeds greater than the no load speed, such that the motor load characteristics are shifted lower and lower, and as the are shifted lower and lower, in that case what happens is that just wait for a minute. In that case what happens is that the machine स्पीड गोज ऑन रिड्यूसिंग. जैसे जैसे आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को नीचे ट्रैवर्स करते चले जाते हैं, यानी फ्लक्स जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे और फिर यहाँ तक पे जब आ जाएंगे तो फ्लक्स आपके पास रेटेड आ जाएगा और उसके बाद आप वोल्टेज कम करते चले जाएंगे. तो व्हाट विल हैपन इज दैट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल गो ऑन शिफ्टिंग और द मोटर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विल गो ऑन शिफ्टिंग, एंड एक्चुअली दिस ओमेगा गोज ऑन रिड्यूसिंग अप टिल जीरो, यानी वहां तक आप उसे ले जा सकते हैं बाई मूविंग दीज पॉइंट्स लाइक दिस. ठीक है, तो और ये काम करेगा कौन, दिस विल बी डन यूजिंग द कन्वर्टर, व्हाट यू हैव पुट इन बिटवीन योर मशीन एंड द सोर्स. ये काम जो है आपके पास, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे लाने का, ये काम सारा जो है वो यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे कैसे आएंगी कि यहाँ पे आप फ्लक्स बढ़ाते चले जाएंगे नीचे की तरफ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे आते चली जाएंगे, फर्दर आप वोल्टेज आर्मेचर की रिड्यूस करते चले जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स और नीचे आते चली जाएंगी. कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ऑपरेटिंग पॉइंट नीचे आने का मतलब ये है कि दैट द स्पीड गोज ऑन रिड्यूसिंग लाइक दिस एंड यू कैन गो फॉर अप टू वेरी लो स्पीड्स और इवन ब्रेकिंग. ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस ऑफ से पुटिंग योर system into regeneration is done by the converter itself. That means as soon as you desire your system to brake, you switch on or push a paddle, whatever it is, you switch anything. जैसे ही आपने command दिया उसे that it has to brake, in that case there will be a closed loop system which will actually monitor the speed as well as the torque that is produced. यहाँ पे T plus में है या T minus में है, तो ये माइनस टी जितना भी है ब्रेकिंग टॉर्क है. ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो यहाँ पे जीरो हो जाता है, सो यू ऑलवेज प्रेफर टू हैव लार्जर वैल्यूज ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क. तो व्हाट यू डू इज दैट यू मूव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स
or move the values such that this high values of minus t are maintained at all the times. ठीक है, but all this has to be done through the converter that is put in between the source and the load. ठीक है, उसके बाद ये डायनामिक ब्रेकिंग है, ये आपको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे, मंडे में मोस्ट प्रॉब्ली। इस चीज़ में इसे विल बी टेकिंग इट इन ए बिट डिटेल बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग is similar in all the machines. Either you have a DC machine or you have an AC machine, induction, synchronous, कुछ भी हो. In all these cases, the principle of operation और से the last one यहाँ पे होगा क्या जो हमने यहाँ पे बताई है आपको ये जो बताया है इसमें यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे खाली ये डीसी मशीन बनी हुई है, इसकी जगह इंडक्शन बन जाएगी, पर फेज इक्विवेलेंट बनेगा तो भी ऐसा सही आता है, कुछ आगे पीछे थोड़ा सा। ठीक है, तो इन ऑल दीज केसेस व्हाट विल बी देयर इज दैट, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन हो, दिस डायग्राम हैज टू रिमेन द वेरी सेम, ओनली दिस मशीन इज रिवर्स्ड, और उसमें मशीन के भी अंदर जो जनरेटेड वोल्टेज है वो भी इसी पोलैरिटी में रहने वाली है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रेकिंग फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ मशीन्स रिमेन सेम। व्हाट एक्चुअली इज डिफरेंट इज दैट कि यहाँ पे जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी की हैं, डीसी शंट की हैं, और वहाँ पे जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इंडक्शन मोटर की और उसकी आ जाएंगी। द सेम शिफ्टिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग ऑन अपॉन द टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पीड will be say implemented using the converters, appropriate converters, what will be put at that particular or put or required for that particular condition or the type of motor, type of source, उन सब के लिए। बट जो बेसिक चीज़ है वो यही रहती है, if you have to pump the energy back into the source, in that case what happens is that you will have to make the machine voltage to be greater than the machine induced voltage to be greater than the source voltage. So to transfer that, and the second thing is that you have to keep the braking torque good such that the machine breaks. So ये सारी conditions exactly वैसे ही हैं, converter बदलते हैं, machine बदलती हैं, but basic principles exactly वही रहते हैं. So we'll be discussing something about dynamic braking on Monday, inshallah, and we'll go further then. Anybody wants to ask anything regarding the topics that are covered today? No, sir. Okay, thank you then. Your next class. Okay, Thank you, sir. Have a nice day. okay, thank you.